चेंज कभी भी हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि हाँ। चेंज तो तभी आएगा अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आप चेंज नहीं करोगे। कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए चेंज आया है। हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स सर्कल शो। हमने रीसेंट टाइम्स में इंडियन फुटबॉल की डेवलपमेंट देखी है, ग्रोथ देखी है काफी हद तक। उसके पीछे ऑब्वियसली क्लब्स, फेडरेशन, लीग, प्लेयर्स, इन सब का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड बट प्लेयर्स के इंपॉर्टेंस के पीछे, प्लेयर्स की ग्रोथ के पीछे, प्लेयर्स की फ्यूचर सिक्योरिटी के पीछे जो लोग हैं, जो मैनेजर्स और एजेंट्स का हाथ रहता है, उनके बारे में अनफॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा बात हमें शायद पता नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। आज हमारे साथ, एंड वी आर लकी टू हैव हिम हियर, इंडिया के सुपर एजेंट मिस्टर सोनू लांबा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। एंड पता नहीं सुपर का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, यस, नो, आई लव माय जॉब, आई लव बीइंग अ प्लेयर एजेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैन। I think वही है सुपर मोस्टली। I heard somebody talk about this in recent times कि what makes you super is whether you are completely in there for with whatever you're doing. So I think so. First of all, sir, congratulations. अभी recently वो जो FIFA agent exam हुआ था, you were one of the very few people across the globe who went through and cleared the exam. So big congratulations on that. थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अगर बता सकें कि व्हाट इट इज एंड व्हाट इट मींस फॉर यू एंड द स्पोर्ट इन इंडिया इन जनरल। टाइम होता है एंड विच इज नॉट वेरी इजी टू क्रैक उस टाइम पे। हम्म। तो बट यू कैन से आई वाज फॉर्चुनेट और थिंग्स वर्कड इन माय फेवर कि फीफा ने उस एग्जाम्स को डिसबैंड कर दिया। ओके। बोला कि अभी नहीं, नाउ यू हैव टू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ with the federation and you should have a tie up with the law firm, or there should be some credibility when it comes to the legality of the whole thing. Then we started working as, and it was called intermediary. We were not called FIFA licensed agent anymore. ओके। We were called intermediary. So पहले ऐसे चल रहा था, but then there was a debate going on for many years के we need to control how things work, because ऐसे तो कोई भी एक एक नॉमिनल सी फी पे करके फेडरेशन को अब एक इंटरमीडियरी बन जाएगा। उसकी वजह से ऑन अ बिगर स्केल बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था यंग प्लेयर्स का, बिकॉज द रूल्स वर नॉट इन प्लेस. So या। now FIFA has come up with this exams again, when with a lot of new changes, lot of new regulations. Okay, this is how, if you want to work as an agent, if you want to work in football, this is how things will be. ओके। ओके। Yes, of तो course, not many people are happy with it, but I have, I've like I'm from a defense background. My father was in the army. तो वो लोग वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि चेंज कभी भी हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि हाँ। चेंज तो तभी आएगा अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आप चेंज नहीं करोगे। कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए चेंज आया है। बीट लाइफ, बीट स्पोर्ट, बीट एनीथिंग, चेंज तो इजीली एक्सेप्ट नहीं होगा। और जितना जल्दी आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, उतना इजी रहेगा। हाँ। सो आई सी दिस एज, इनिशियली जब ये आया था तो मेरे को भी लगा था कि यार, एट दिस एज नाउ वी हैव टू स्टडी सो मच, एंड देयर वाज लॉज एंड हाउ द सिस्टम वर्क, द कंस्ट्रक्शन, सब कुछ स्मॉल स्मॉल डिटेल्स पढ़नी पड़ रही थी इनिशियली। बट देन इट वाज लॉट ऑफ फन. ओके। I learned so much with this just by this whole process कि मुझे, I was little embarrassed and I used to tell myself, you should be knowing all this. ओके। ये तो minus minute of details and you should be knowing it. Not ये exam नहीं होना चाहिए तब. So for me, of course, the other day, one of my interviews, my daughter was making fun that, Papa, now you're saying, oh, it is very good, just because you have cleared the exam. ओके। Yeah. But now, to be honest, it's good. Of course, there are changes. Of course, there are few things that agents, including myself, we are not very happy about it. But like I said, changes people take time to accept, and let's just hope that it on a longer run it's for the greater good. वेरी फेयर। सो आई वांट टू टेक यू बैक टू द वेरी बिगिनिंग नाउ। जैसे आपने मेंशन किया, इट स्टार्टेड अराउंड 2013-14। पहले इंजीनियरिंग, देन मर्चेंट नेवी, देन हाउ डिड द स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट? No, I was always into sports. Like in school, college, I used to play a lot, ओके। and sports always used to excite me. And then, in fact, I was introduced to European football much later. ओके। But because Chhetri and I have been together since childhood, so उसके through
दिल्ली फुटबॉल में क्या होता है, हम लोग उसके हाँ। उसके मैचेस के लिए आते थे जब वो सिटी क्लब से खेलता था। दिल्ली लीग उस टाइम पे मतलब बहुत मतलब उस टाइम में हम बहुत बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे। बहुत छोटा होता था, फिर ड्यूरन कप उस टाइम तो इंडियन फुटबॉल का जो एक लव है वो मेरे अंदर बहुत यंग एज से ही था, इवन व्हेन वी वर इन स्कूल। ओके। सो व्हेन आई वाज इन शिपिंग, सो उधर ना उस टाइम पे देयर वाज नॉट मच ऑफ इंटरनेट। सो न्यूज के हम्म। नाम पे दो लाइन आती थी दैट हाँ। लेट्स से मोहन बगान प्लेड 2-2 ड्रॉ विद ईस्ट बंगाल। या। ये नहीं पता कि किसने गोल मारा, कैसा मैच हुआ। तो जैसे शिप पोर्ट पे आता था, आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड कि मेरे को इंटरनेट कैफे जाना है, सबसे पहले पूरा हम्म। मैच का समरी पढ़ना है, कौन कैसे खेला। हाँ। स्पेशली व्हेन इट इज छेत्रीज मैच, तो मैं और ज्यादा वो इम्पेशेंट रहता था कि कब हम पोर्ट पे पहुंचेंगे। एंड उस टाइम पे कॉलिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव, उस टाइम से या। सैटेलाइट कॉल्स होते थे शिप्स पे। तो वो लव और वो हमेशा था, आई वाज ऑलवेज इन्वॉल्व। जब भी मैं after 6 months when I used to come back, I used to have like 3-4 months off. I used to travel so much for all these matches. So this thing of I want to do something where I can be on land, be connected with football was always there. So I ओके। was looking out for options कि मैं क्या कर सकता हूँ every time I used to come back from ship. हम्म। So in 2013, my daughter Natalia was born, and the moment वो nurse आई and she gave my daughter in my hands, and I just looked at her and I promised her कि I'll never leave you and go. मैं तो वो 6-6 महीने छोड़ नाइस। के नहीं जाऊंगा। And I had नाइस। no idea मैं क्या करूंगा। ओके। तो देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं। एक बिकॉज हम्म। आफ्टर आई वाज 30, सो या। 20 to 30 में तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम करना क्या चाहते हो लाइफ में, बिकॉज उस टाइम पे प्रेशर इतना होता है एंड वी ऑल कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो उस या। टाइम पे तो एक ही प्रायोरिटी होती थी कि मनी कैसे अर्न करना है। पैशन हाँ। वैशन तो होता रहेगा। सो दैट 10 years मच नेवी गेव मी दैट कंफर्ट कि हाँ भाई अभी तुम थोड़ा सॉर्टेड हो। So that's when I was exploring. मैं एक मैच देखने गया हुआ था, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। गोवा में मैच था, चर्चिल ब्रदर्स वर्सेस मोहन बगान। हम्म। तो हम लोग नेक्स्ट डे उठ के ऐसे हम लोग बात बात कर रहे थे एंड सडनली अ टॉपिक केम इन एंड आई came to know that Jorge Mendes made more money than Ronaldo. I said, how is that possible and who's Jorge Mendes? या। And I came to know कि ऐसे एक फुटबॉल एजेंट होता है जो हम्म। यूरोपियन फुटबॉल में सबको हेल्प करता है, क्लब्स में, नेगोशिएशंस में, लीगैलिटीज में, एवरीथिंग। वन स्टॉप सोल्यूशन होता है बेसिकली एजेंट। तो मैंने पूछा कि इंडिया में क्यों नहीं है। तो उसने बोल तो छेत्री कि इंडिया में। एंड उस टाइम पे भी छेत्री एजेंट, छेत्री वाज आई थिंक द ओनली प्लेयर और वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु वाज स्टिल यूजिंग एजेंट्स फॉर हिज नेगोशिएशंस। ओके। तो that's how this I got really intrigued into it। या। ये होता क्या है, करता क्या है, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है। हम्म। तो इनिशियल ईयर्स में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इवन कन्विंस प्लेयर्स कि यू शुड यूज एन एजेंट, बिकॉज उनको लग रहा ओके। था कि जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो मैं ओके। एजेंट को क्यों इन्वॉल्व करूं। इवन क्लब्स वर नॉट वेरी कंफर्टेबल ओके। because it encourages a cost on a player or हाँ। on a club when you're using an extra service. या। But then slowly, now it's been 10 years. Slowly, clubs and players they all realize that it's better. It's better in a longer run. It's more professional. So इसलिए अब तो even 16, 17-year-old players have their agents. आई थिंक So इवन that's यंगर, आई थिंक इवन even यंगर। younger, even younger. Although इंडिया में वो अभी सिस्टम और स्ट्रक्चर है नहीं हम्म। uska, but still lot of the players who are you know come to a limelight or doing little better than others, so agents वहाँ पहुंच हैं, मतलब agents are reaching out to these players also। ओके। ओके। सो at that time, how difficult was it to decide to start your own agency instead of maybe joining something else or maybe working with somebody else for starters? no, to be honest उस टाइम पे uh, इतनी एजेंसीज थी भी नहीं। Okay. आई थिंक जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर लाइक 1 or 2 एजेंसीज Okay. जो ये लोग कर रहे थे। And but then I did take help from a friend of mine in Portugal. Okay. Then he connected me to one agent in Dubai.
Okay. उन्होंने दे डिड हेल्प मी अ लॉट. बट उसके बाद आफ्टर getting their guidance for 5-6 months, I realized नहीं कि I can do that. Okay. And I realized कि PR is my strength. Hmm. जो मुझे पहले नहीं पता था. Although Okay. now a lot of my friends tell me कि तेरे को तो स्कूल में पता होना चाहिए था that Okay. you were always friendly, you always had this good Yeah. friend circle, you always attracted a lot of people to be their friend. तो तुझे तो पता है Hmm. you have always been a people person. Yeah. तो ये मुझे तब पता चला कि नहीं, I can do this. I have to educate myself about the game, about the system. So, and that's how, I started 2013. I decided 2014, I started working professionally. Initial few years were very difficult Hmm. because it takes a lot of time to gain someone's trust. Someone's putting their career in your hands. Yeah. Even it takes a lot of time, even for the clubs to start, let's say, entertain you, take your Hmm. calls, start talking to you. So Yeah. yeah, it was difficult, uh, but yeah, I really enjoyed the journey. I have no complaints. Even those small things, even those small hiccups, I enjoyed it. Okay. So I have two questions from that, but I'll ask the journey related question first. Like you said, it's been around 10 years roughly. Hmm. How have the challenges evolved? Sorry, because initially it was like you said, getting somebody to trust you more than anything else. How have the challenges changed now over the last 10 years? The see challenges. One again, I would say competition has increased. Earlier, there Hmm. were few agents. Now, I do not know the exact number, but I'm sure there must be 25 other agencies Minimum, yeah. who are involved into Indian football. So that has increased. Then times have changed from the time I got into, like, players' mentality has changed a lot. Yeah. Now, when 10 years ago I was 30 years old, a 30-year-old talking to a 20-year-old was very different than a 39-year-old talking to a 18, 20-year-old. Yeah. So that takes a lot of time. And now even the young players' mentality has changed. Hmm. I'm not saying in a negative way, but that's the way it is. Like I tell all my players, be patient, believe in the process, believe in the journey. Yes, one 17, 18-year-old must have got a really good contract in a really big Yeah. club, but that's his journey. You focus on yourself. If you're doing the right thing, if you're working hard, if you believe in yourself, if you take care of yourself, be focused, you will reach your destination. Now, I Yeah. do not know what that is. If that is playing for a certain level league, playing for a certain club, playing for the national team, playing in age category, that even I do not know. I do not know what your final destination will be, but you will reach. For whatever efforts you put in, you Hmm. will you will reap the results. So don't worry about it. Do not fall, because this is what I feel is the biggest challenge these days. Yeah. उसको कितना मिल रहा है, उसका सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स क्यों हैं, उसका सोशल मीडिया पे ब्लू टिक वेरिफिकेशन क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ है अभी तक. Uh-huh. आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्ली मैं उनकी पोजीशन पे होता, मैं भी वैसा ही फील करता. But that's where So, our job, their mentors, their coaches, their senior players, we come into picture. We yeah. have to tell them that everything will fall in place. Your end of the day. So the other yesterday only, I had a meeting with this player. So I was just talking about this, and I was telling him that end of the day, you are not an influencer. Hmm. That your numbers will depend on what post you're putting, what content you're creating. No, all your followers are your fans, football fans. All you have to do is focus on that. इन्फ्लुएंसर्स को सोचना पड़ता है कि आज मैं क्या नया कंटेंट क्रिएट करूं कि मेरे जो एंगेजमेंट है वो एंगेज रहे. True. यू डोंट True. हैव टू. योर जॉब True. इज वेरी इजी. गेट अप, True. go to training, work hard, match day, give your best. They will reach out. तुम्हारे जो Yeah. फैंस हैं, people who wants to know what you are doing, they will reach out.
एंड आई टोल्ड हिम पिक अप एनी टॉप फुटबॉलर एंड उसके सोशल मीडिया जाके देख लो। तो ये सोशल मीडिया का प्रेशर, ये पीयर प्रेशर, ये इम्पेशंस जो एक नई जनरेशन में है, दे सब वांट कुछ चाहिए, रिजल्ट, अभी चाहिए। they want results very fast. हम्म। And to be honest, we can't blame them because system is like that. It's not, अगर हम, मैं, मेरे और मेरे एल्डर ब्रदर में बहुत फर्क है when it comes to patience. ओके। बहुत फर्क है when I how I see life, how he sees life. ओके। Because उनका सिस्टम डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, मच मोर डिफिकल्ट था मेरे से। हम्म। मेरे लिए चीजें थोड़ी इजियर थी कंपेयर टू हिम। एंड सिमिलरली जो डिफिकल्टीज लेट्स से छेत्री ने या गुरप्रीत सिंह संधू ने, संदेश ने देखी होंगी, बाईचुंग भाई ने उनसे भी ज्यादा देखी होंगी, रेने डी सिंह ने उनसे भी ज्यादा देखी होंगी, जो ये यंग प्लेयर्स हैं, इनको पता ही नहीं होता। मतलब इनिशियली जब फर्स्ट ईयर ऑफ आईएसएल, आई रिमेम्बर मैं अपने एक प्लेयर से मिलने गया था एंड डिनर के बाद वो अपनी प्लेट में उसने 3 रसगुल्ले रखे हुए थे एंड इट वाज नॉर्मल दैट टाइम। ओके। आज आई डोंट थिंक हार्डली कोई भी ऐसा एथलीट होगा एटलीस्ट ड्यूरिंग द सीजन जो who will consume this amount of sweets. So the difference has come from the कितनी knowledge available थी। हाँ। अब with internet you can find out everything and anything. ट्रू। पहले ट्रू। नहीं पता था। पहले मैं टॉप टॉप प्लेयर्स को जानता हूँ जिनको ये नहीं पता था कि क्या खाना है, एक्सरसाइज हम्म। कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, प्रोटीन पाउडर्स कैसे लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कौन से लेने चाहिए। सो या। दैट वे बहुत इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। या। सो चैलेंजेस उस वे में बहुत चेंज हो गए हैं। पहले पहले चैलेंज यही होता था कि प्लेयर को कन्विंस करना कि आपके लिए एजेंट इंपॉर्टेंट है। अब ये सबको समझ आता है, सबको मालूम है कि एजेंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा एजेंट इंपॉर्टेंट है वो प्लेयर्स अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसका डिसाइड करते हैं। बट ये जो अदर चैलेंजेस आ गए हैं विद दिस न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम, हाउ द सिस्टम हैज बिकम, वो एक नया चैलेंज है। ट्रू। सो बट अभी रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, थोड़ा टाइम पहले वी डन अ कॉन्वर्जेशन विद गौरमांगी सिंह सर। उनसे भी यही बात हो रही थी कि social media, how it is an opportunity for sure, because it does provide a platform at the end of the day यस, for the players to be more visible, because unfortunately even today, even during the ISL season, उतनी ज्यादा प्लेयर्स की, उतनी ज्यादा गेम्स की मेन स्ट्रीम मीडिया में बात होती नहीं जितनी होनी चाहिए। राइट, बिकॉज इंडिया की प्रीमियर लीग है, एंड इन द लास्ट फ्यू सीजन्स तो क्वालिटी हैज ऑल्सो शॉट अप। यस, बट so that's what he was saying, it is an opportunity, but how you manage that front यस, is a big issue right now, especially उनसे तो he was talking from the perspective of a coach now. हम्म, He was like कि now अब मेरा काम ये होता है कि यंगर प्लेयर्स को थोड़ा सा ये कि बेटा, इस ये लाइक यू सेड, ये आपका मेन लाइफ नहीं है, ये आपका सप्लीमेंट्री है। तो उस पे, एग्जैक्टली। बट in terms of the brands also, is it, from what I have seen in my experience with the marketing end of it all, the social media numbers then matter a lot for a for quite a few brands, even with athletes. Yes, no, for sure. That's the How, first thing they ask for. so how does that then, like you said, ki a lot of people end up comparing. How does that, as a manager, as an agent for those players, how does that become an issue for you? Ki, acha, it is being built, but please don't focus that much on building that. No, no, when I was talking about social media, it is very important. It That's what is I'm very, saying. very important. One, it like you said, when it comes to brand collaboration, it is important. When it comes to your presence in the system, it helps you a lot. Hmm. But my point is, like, the brand, for the brand, it is very important how much followers this person has. वो फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, वो Performance. इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है आप क्या कर रहे हो अपने फील्ड में। हाँ। अब अगर मैं मैं लगा लो, मैं अपना कोई चैनल स्टार्ट करता हूँ एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल,
और फुटबॉल इन जनरल और एनीथिंग, तो मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो मैं ये नहीं सोच सकता ना कि यार मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, मैं क्या कंटेंट क्रिएट करूं, मैं इससे हटके कुछ करने लग जाता हूँ, मैं डांस वीडियो डालने लग जाता हूँ, मैं पार्टी वीडियोस डालने लग जाता हूँ, बट देन ऑफ कोर्स फॉलोअर्स उसमें भी बढ़ जाएंगे, देन आई स्टार्ट अट्रैक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ, but then that's not my focus, and that's not uh, the purpose in my mind when I started it. Yeah. आप अच्छा फुटबॉल खेलो, I can give you in writing, all these things are secondary and they will fall in place. ये सब अटैच्ड हैं, Hmm. ये सब अटैच्ड हैं, things will fall in place. Keep doing good, keep working hard, keep performing, ये बाकी चीजें फॉलो, एंड एज एन एजेंट ये हमारा जॉब है, उसके सोशल मीडिया को भी मैनेज करना, उसके Yeah. सोशल मीडिया में उसको हेल्प करना, उसके उसके सोशल मीडिया रीच को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बट क्या होता है, अभी आप यंग प्लेयर हो, लगा लो आप 18 हो, 19 हो, 20, 21 हो, यू हैड अ Hmm. रियली गुड गेम, यू पुट अ नाइस पोस्ट विच यू, जो हम लोग भी इंकरेज करते हैं कि इस टाइप के पोस्ट जरूर डालो, यू गेट लॉट ऑफ गुड कमेंट्स, good player, future of India, world, watch out. You know, fans, they have emotions. Yeah. People pour their emotions out. You're very happy today. You're not going to have all good games. True. But at the same time, because you're young, you're a little immature. Emotionally, you get bothered fast. Compared to a senior player, you get bothered faster. तो जब नेक्स्ट टाइम जब वो नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ना, इट शुड नॉट बॉदर यू. सो व्हेन आई से कि इतना इतना इसके अंदर इनग्रॉस नहीं होना है, दिस इज व्हाट आई मीन, Hmm. कि हाई पे बहुत हाई नहीं होना है, लो पे बहुत लो नहीं होना है, एंड Hmm. बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर, you know, people will have their opinion on you. It should not bother you. If Yeah. someone tomorrow says you're better than Ronaldo, it should not get into your head. True. If someone says you're worse than my neighbor, it should not get in your head. Yeah. It's okay. You by the virtue of the position you are in, you will have to face this. You will Hmm. have to face people's love and hate. Yeah. And the same guy who loves you today will hate you tomorrow. We saw that with Sunil sir abhi in Yes. this season. Like But that's the part of that's what. any celebrity's journey. लोग मेसी रोनाल्डो को नहीं छोड़ते हैं, Yeah. मतलब irrespective what they have achieved, True. वो उनको नहीं छोड़ते हैं, तो True. ये तो होगा ही. ट्रू. और इंडिया वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल है इन केस. लोग विराट कोहली को बोलते हैं कैसे खेलना है. वही वही मैं बोल रहा था. इंडिया वैसे ही ज्यादा इमोशनल है, उनको नहीं छोड़ते ऐसे प्लेयर्स को जिनको सारा दिन हम देखेंगे बैठ के कि हाँ क्या हाँ. किया, अब क्या किया, अब 2 घंटे बाद क्या किया आज इसको. तो ऐसे में एज द मैनेजर्स कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी प्लेयर का सोशल मीडिया कुछ दिन के लिए बंद ही करना पड़ा हो कि यार बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द ओपिनियंस दैट आर बीइंग अट्रैक्टेड बट बिकॉज ऑफ द वे द प्लेयर इज हैंडलिंग इट मे बी. नहीं, एक्चुअली आई वुड से आई हैव बीन फॉर्चुनेट हम्म. कि द सीनियर प्लेयर्स वो तो खुद ही चीजों को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं. यंग प्लेयर्स मोस्टली ऐसे हैं हु आर हु लिसन्स, खुद ओके. ही खुद ही कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेते हैं, वही. हाँ. क्योंकि मैं डे वन से आई आई वांट टू, मैं ये इंस्टिल करना चाहता हूँ कि इसको इतना बड़ा मत बनने देना, हाँ. इसको इतना बड़ा मत बनने दो कि वो एक देयर इज अ कोट नो, people's opinion cannot be a reality. ट्रू. So don't fall too much into it. Yes, जो इसके benefits हैं वो जरूर लो. ट्रू. एंड पहले आज से 4-5 years ago इतना ब्रांड्स इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे इंडियन फुटबॉल में, हाँ. but now things have changed. Now every day there is some or the other query for one or the other athlete. I'm talking या. about footballers. या. So things are changing, and the good part is it's only going to get better because football is getting better and bigger in the country. ट्रू. ट्रू. सो speaking of the young players then like you said you've been very fortunate in terms of the people you are working with and you Yeah. have worked with. तो ऐसे में जो आपका स्काउटिंग प्रोसेस रहता है बिफोर एनीथिंग एल्स दैट इज द
base for anything as an agency. How do you go about it? What do you see in a player? I'm sure footballing ability to एक very big aspect है for a player to be associated with anybody. Apart from the footballing ability, आप as an agency, as an agent yourself, आप ऐसी कौन सी चीजें देखते हैं जो okay, this is somebody I want to work with? No, actually, there are two kinds of there are two ways we an agency signs a player. एक तो हम स्काउट करते हैं, इफ अ प्लेयर इज टैलेंटेड और हमने सुना कि उसके कुछ हैबिट्स हैं जो फेमस हैं और वुड से नोटोरियस है, Okay. then when we meet them, we talk to them, we try talking to them about you have great talent, you can be a big player, but ये चीजें कुछ ही दिन आपका सपोर्ट करेंगी. So if you want a long career, मैं सब प्लेयर को यही बोलता हूँ, अपनी लाइफ को आज से एटलीस्ट 35 इयर्स तक का तो आप देखो कि उस लेवल तक मुझे टॉप लेवल फुटबॉल खेलना है. अब वो अचीव करने के लिए ये स्टेप मुझे लेने पड़ेंगे. आप ले पाओगे तो ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिसमें प्लेयर्स वर लाइक एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो नहीं सस्टेन कर पाए बिकॉज इट्स नॉट इजी. लाइक football is very simple, but it is very difficult to do those simple things. Yeah. Like 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम से उठना, टाइम से सोना, एक टाइप का खाना खाना, आप कर लोगे. But doing that thing for the next 10-15 years of your life is not easy. True. हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जितने भी नॉर्मल जो बिजनेसेस में है, 3 दिन अगर बहुत प्रेशर आ जाता है काम का, तो चौथे दिन सबको अनवाइंड करने के लिए एक ब्रेक चाहिए, एक पार्टी चाहिए, एक गेट टुगेदर चाहिए. बट एक एथलीट की जर्नी में ऐसा नहीं है. एथलीट नहीं बोल सकता कि मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ वर्कआउट करते करते, मैं कल नहीं करूंगा, मैं परसों नहीं करूंगा, मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा होगा. जब उनका सीजन इज ऑन, दे आर लाइक मशीन्स. एक ही सिस्टम में रहते हैं, एक ही तरीके से जीते हैं. तो दिखने में बहुत ग्लोरियस है, ऑफ कोर्स इसके पर्क्स बहुत हैं, बट इट इज नॉट इजी. इट इज नॉट इजी टू बी अ प्रोफेशनल एथलीट. देयर आर लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. मतलब बहुत फेमस, हम लोग इस बारे में हंसते भी हैं कि छेत्री भाई की शादी से पहले सब कुछ रेडी हो रहा था, सब रेडी हो गया है सब, और छेत्री भाई कहाँ हैं, वो जिम में है. तो that's how all athletes are. Yeah. और मैं सबको ये बोलता हूँ, और अब तो बहुत एग्जांपल्स हैं जो करंट प्लेयर्स जो 35, 36, 37 में भी टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं. Yeah. The other day, that very famous / infamous interview of Ronaldo with Piers Morgan. He said this thing that I will be surprised to see a player playing at a top level and having a long career. Yeah. Because now these other things, these distraction, this small things giving too much satisfaction, and if something goes wrong, putting a player too down, that has started playing a big role. Okay. ऐसा नहीं है कि ये वाली जनरेशन बहुत स्पेशल थी, इट्स जस्ट दैट सर्कमस्टांसेस इनके पास. तो इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स हैं इनके पास आसपास, चाहे इनके सीनियर प्लेयर हैं, इनकी फैमिली है, इनके कोचेज हैं, इनके मेंटर्स हैं, इनके एजेंट, इट बिकम्स आवर जॉब कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको. हम कैसे इनको राइट गाइड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स एक सर्टेन लेवल तक ही कोई भी सुनेगा आपकी. एंड ऑफ द डे इट्स प्लेयर्स लाइफ, प्लेयर्स करियर, देन दे डिसाइड. So, like you said, whenever you're speaking to a younger player to sign them on, वो जो एक attitude difference है. I was covered. So that is a big answer. The attitude difference has to be there, like you said. Yeah. So if a player is exceptionally talented, तब as an agency भी आप बहुत चीजें ignore करते हो. कि नहीं इसको, and then you start working on it. And the other way is कि sometimes a player reaches out to an agency. उस केस में हम लोग सब कुछ चेक कर लेते हैं. कौन है प्लेयर, कैसा है, वो कैसा है. We try talking to his coaches, we try talking to his fellow players, so we get an idea.
who are landing. Because I strongly feel, suggesting a player, guiding a player is one thing, but if you have signed a player, Yeah. that means you have taken a responsibility of his career. मतलब someone has put their actual life in your Yeah. hand, कि अभी वो उसकी फैमिली सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रही है. So True. you can't True. fail. True. एक So ऑलमोस्ट पेरेंट वाला रोल हो जाता है, if I'm not yes. wrong. No, there are a lot of players who get closer to an agent more than they are closer to their friend or family or their girlfriend. Yeah. So So, yeah. when a player approaches you, obviously they have some sort of a trust factor involved already. When you are talking to a new player for the first time, I'm sure in the last 10 years that's changed a lot. It is not as difficult, but in the initial days, कितना मुश्किल था to get players to trust you, like you said. उस टाइम पे ना एजेंट्स का सिस्टम था इतना ज्यादा, ना उतना अवेयरनेस था. Mm. Families played a huge role at that point, I'm sure, in terms of managing a player's Yeah. time a little bit. How difficult has it been वो trust factor establish करना? No, it was very difficult. I remember I spoke to 7, 8 players and everyone, because I have known these players because Yeah. मैं बहुत मैचेस देखने आता था. So वो एक फेस ट्रस्ट था उनको कि हाँ, आई नो दिस गाय, बट क्या मैं इसको अपना करियर इसके हाथ में दे सकता हूँ, और मैं क्यों इसको अपनी सैलरी में से 5% दूं. Yeah. वो टू कन्विंस देम वाज नॉट इजी. एंड सुजय, आई रिमेम्बर मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, देयर वर 4 प्लेयर्स, एंड उससे एक रात पहले मेरे को था कि मेरे को इन प्लेयरों से मिलना है, मेरे को बताना है कि कैसे है. इट वाज माय फर्स्ट मीटिंग. All I could say was, "Hi, how are you?" And pin drop silence. And I'm talking this 10 years ago. Yeah. आज मैं, I'm able to speak to you. I'm able to express myself. उस टाइम पे I just said, "Hi, how are you? All good, भाई कैसा है? हाँ, good, good. Last game बहुत अच्छा था. Good." Pin drop silence. 15 minutes. We could Okay. hear the fan moving, the clock ticking, and I'm not exaggerating a bit. After 15 minutes, I said, "Okay, let's eat." That's And then I thought maybe it's not for me. मैं नहीं कर सकता हूँ. Hmm. मेरे से तो बात ही नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे करूंगा. आई कॉल्ड वन क्लब ऑफिशियल. एक प्लेयर का सैलरी नहीं आया था. वो क्लब ऑफिशियल इतना रूडली फुल वॉल्यूम पे मेरे पे चिल्लाया, "आज के बाद अगर तुम्हारा फोन आ गया ना मेरे को, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ." लाइक, और उससे पहले मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ में मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था. Yeah. आई यूज्ड टू कमांड रिस्पेक्ट. सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, तो मेरे को लगता था कि ये क्या हो गया मेरे साथ. कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है इतना बदतमीजी से. Yeah. बट देन यू लर्न कि True. ही इज नॉट शाउटिंग ऑन यू, ही इज शाउटिंग एन एट एजेंट द पोजीशन यू आर कॉलिंग फ्रॉम. Yeah. आई कांट टेक इट पर्सनली कि उसने, लेट्स से कि सोनू लांबा के ऊपर उसने शाउट किया. नहीं, उसने सोनू लांबा के ऊपर शाउट नहीं किया. उसने एक एजेंट के ऊपर शाउट किया जो एक इशू की वजह से आपसे Hmm. आर्ग्यू कर रहा था. Yeah. सो यू कांट टेक थिंग्स पर्सनली. True. True. तो ये सारे लेसन्स मैंने ओवर द कोर्स सीखे हैं. Okay. It's not been easy, but yes, it is full of entertainment. Like I would say that sports भी एक, on the field, off the field, it's a lot of entertainment. Yeah. मतलब लगता नहीं है that you're working. It's very different. And It, every day is a high. Your player scores a goal, you're super happy. Your player misses a sitter, you're so sad. yeah. You're in there. You're in there with them. Yes. तो स्टार्टिंग में यही challenges थे सबसे ज्यादा. So, I had heard you speak about this somewhere else. Ki, Anwar Ali, Mr. Anwar Ali was your first player that you signed, and how Sunil Chhetri sir, despite having had a childhood relationship with you, and he was like, "I'll not be your first 10, I'll be your Yes. 11th player." Yes. How was it getting to from Anwar Ali to Sunil Chhetri? How was that? No, to be honest, signing first player was difficult.
Okay. And see, I'll always be thankful to Anwar because he trusted me. So at that time, Anwar was at peak of his career and very reputed name. And a Hmm. lot of other players used to look up to him. Yeah. So when I signed Anwar, suddenly that big trust factor came in. Okay. Yeah. Then I signed Anwar. The next day I signed Rakesh Masih. The next day I signed Jagpreet. And then over the course of time I learned कि एक एक्चुअल में फुटबॉल एजेंट करता क्या है, मेरे को क्या बताना है, Hmm. उसको कैसे इनको बताना है कि वाई इट विल बी बेनिफिशियल टू यू. Yeah. सो एंड इन फैक्ट इनिशियली तो इट हैपेंड कि मैं बहुत प्लेयर साइन कर रहा था. जिस प्लेयर का कॉल आता था आई यूज्ड टू साइन हिम विदाउट नोइंग कि कौन प्लेयर है, कहाँ खेल रहा है, कैसा खेल रहा है. सो अच्छा. signing Anwar was very difficult. Signing the first player, convincing Anwar was not difficult because there was a lot of mutual respect and we share a birthday also. So we've Okay. always been like very close. वो Okay. छेत्री जेसीटी में था, अनवर जेसीटी में था, तो हम लोग जाते थे, अनवर के साथ मिलते थे, बहुत हंसी मजाक करते थे. तो वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं था. बस ये था कि मैं भी ये चांस नहीं ले सकता बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज और अब्यूज माय रिलेशनशिप विद एनीवन Yeah. जस्ट बिकॉज वो मुझे अपना फ्रेंड समझता है. तो इसलिए मैंने भी वो टाइम लिया कि थोड़ा मैं अपने आप को भी रेडी कर सकूं कि हाँ आप अपना करियर मेरे हाथ में दे सकते हो. Hmm. सो वो साइन किया एंड देन छेत्री भाई वाज लाइक कि यू नो जब आप ये कर लो. एंड छेत्री भाई इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज नेम. ही सेड आई हैव वर्कड रियली रियली हार्ड, तो आई कांट जस्ट गिव इट लाइक दैट. Very fairly so. Yeah, you earn it. Yeah. So that's how then as a 11th player, because of his famous jersey number, I Okay. signed him as an 11th player. So you worked with a lot of players over the course of Yeah. these 10 years. सबसे मजेदार प्लेयर कौन रहा है काम करने के लिए साथ में? हर प्लेयर का बहुत हर प्लेयर बहुत डिफरेंट है. True. बहुत ही डिफरेंट है कि कुछ लोग बहुत फनी हैं, कुछ लोग बहुत सीरियस हैं, कई लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं. जैसे मजेदार में आई वुड पंजाबी प्लेयर्स आर वेरी फनी. दे विल क्रैक यू Yeah. अप. तो मतलब सभी हैं. मतलब शहनाज के साथ बहुत फन है, Hmm. वेरी गुड गाय. देन लाइक अभी उदांता है. उदांता के साथ हाँ. क्या है कि बहुत कम बात करता है वो. बहुत बहुत काउंटेड वर्ड्स हैं उसके जिसमें वो बात करता है, तो उसके साथ वो दूसरा टाइप का है. देन यूजीन इज लाइक अ प्रॉपर प्रॉपर जेंटलमैन. Okay. मतलब वो ऐसा नहीं है. एंड इट यूजीन टेक्स हिज टाइम टू ओपन अप. he'll not be like very open and friendly initially. Anwar extremely funny, Yeah. extremely funny. तो मतलब हम काम की भी बात कर रहे हैं तो 3 जोक्स हैं उसमें. Okay. So every player is so different, and yeah, so entertainment it becomes very very different to pick one because everyone has brings some element of entertainment by themselves with them. So what has been the most entertaining project then? मतलब maybe a transfer, maybe a brand deal or whatever, जिसने आपको बहुत मतलब like क्या हो क्या रहा है? I'm just laughing all the way through. नहीं एक्चुअली ये जो साइनिंग्स डील होती है ना, दे आर नेवर एंटरटेनमेंट. कुछ ना कुछ रहता ही है. जैसे कि 10 years शायद ही कभी ऐसी साइनिंग हुई होगी जिसमें क्लब सोचेगा कि मैंने राइट अमाउंट पे साइन किया, या प्लेयर सोचेगा कि मैंने सही अमाउंट पे साइन किया. Okay. क्लब विल ऑलवेज थिंक कि थोड़ा और कम हो सकता था, प्लेयर सोचेगा मैं थोड़ा ज्यादा हो सकता था. तो वो वाला प्रोसेस तो एंटरटेनिंग कभी नहीं होता है. बट वन द मोस्ट चैलेंजिंग वाज व्हेन छेत्री साइन फॉर बीएफसी After बिकॉज Portugal. उसका एनओसी 11th आवर पे आया था स्पोर्टिंग से. हाँ. हाँ. तो वो बहुत स्ट्रेसफुल था कि एंड मैं बहुत ही आई वाज वेरी नाइव. मुझे I इतनी think it was नॉलेज. very early days also for you, if I'm not दिस वाज wrong. 2014. Yeah. मुझे नहीं थी इतनी नॉलेज के क्या हो रहा है, अब क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन आई. हाँ. वो बहुत चैलेंजिंग था.
उसके अलावा हम कभी signing is not that fun. Once you signed, it is one of the most satisfying feeling, Okay. without doubt. मतलब बहुत मजा आता है, यू फील वेरी हैप्पी, चाहे वो Hmm. प्लेयर ने सेकेंड डिवीजन में साइन किया है, चाहे आई लीग में साइन किया है, चाहे आईएसएल में साइन किया है. अगर इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली प्लेस अ प्लेयर, देन यू आर वेरी हैप्पी. वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, स्लीप रियली वेल. एंड जब तक ट्रांसफर विंडो ओपन होता है, प्लेयर की साइनिंग नहीं हुई है, देन यू आर नेवर एट पीस. Yeah. यू आर नेवर एट पीस. मतलब अभी जैसे द एडवांटेज ऑफ माई वर्क, as long as I have my laptop and my phone is on, I am at work, so I can Yeah. go anywhere. Yeah. मतलब if मतलब even if we have gone on a holiday, so I am at work. But उसी का डिसमेरिट ये है कि I'm never off work. Never. 3 o'clock in the night, 6 o'clock in the morning, irrespective, daughter's birthday party, you're always at work. तुम्हें कभी भी Yeah. कॉल आ सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, तुम्हें उस इशू को सॉल्व करना है. तुम इशू को ये नहीं बोल सकते अच्छा मैं तेरे को करके बताता हूँ या करता हूँ. सो यू आर Hmm. प्रेजेंट ऑल द टाइम. Yeah. So I'm sure that takes a toll also, थोड़ा सा. Sometimes yes, sometimes. So by the time you hit your bed, it's like you're so exhausted mentally and physically. ऐसा लगता है कि oh man, not a good day. But then yes, then like you say, sun rises again. It's a new day. Start fresh. That's the spirit, I'm sure, because it's I'm sure it is difficult. I'm sure anybody listening out there for who are thinking of making a career out of this, out of getting into the sports management industry, there has to be that sacrifice element as well on your end. Like you said, athletes का भी एक sacrifice element बहुत ज़्यादा है. It's the same for you as well, because a lot of times आप प्लेयर्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, समटाइम्स इवन मोर देन योर फैमिली, बिकॉज आई एम श्योर कई केसेस में लास्ट थॉट इज अ सर्टेन प्लेयर एट नाइट, एंड द फर्स्ट थॉट इज आल्सो कि अच्छा Yeah. आज क्या कर सकते हैं इसके लिए, समथिंग इन टर्म्स, स्पेशली इन द ट्रांसफर सीजन लाइक यू सेड. मुझे not some every night, and I'm not every single night. The players जिनको भी प्लेस करना है, their names will go through your mind once, या. and then you think, okay, this is what I'm gonna do tomorrow. ओके. Then you get up, you start your day, and then you start working on it. You dream about these things because this becomes your life. या. Your family revolved around it. या. My 10-year-old daughter knows किस प्लेयर की साइनिंग हो गई है किस क्लब में और किसकी होनी है ओके. और कितनी, एंड शी हैज हर ओन फेवरेट्स. सो शी कीप्स टेलिंग मी पापा उनकी साइनिंग करवा दो आप जल्दी. मैं एंड आई टेल हर कि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. घर से भी प्रेशर आ रहा है, मतलब देख लो. इनको तो योर फैमिली इज फुली इन्वॉल्वड इनटू योर वर्क. या. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट. ट्रू. ट्रू. So we speak about transfers and how it is a very sensitive time, like you said. या. I'm sure the transfer, the decision is not just ki, okay, itne paise. It is a lot of factors. What are some of the main factors for you? As in, again, like you said, you're very invested in the players that you're working with. What are the main factors for you? Okay, this is how I want to place this particular player. No, like, see, generally, money में इतना difference नहीं होता. When let's say if a club is chasing, 4 clubs are chasing one particular player, money में difference होगा, लेकिन इतना major नहीं होगा. Yeah. अगर बहुत major difference होगा, then sometimes club loyalty comes into picture. Players don't want to leave their club. Players don't want to leave their home club. उनको लगता है कि Yeah. नहीं, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ. Like बट अगर मनी में इतना यूजुअली इतना डिफरेंस नहीं है, देन वी सी कोच कौन है, क्लब का एटमॉस्फेयर कैसा है, किस टाइप के प्लेयर्स हैं. सीनियर प्लेयर्स में इफ इट्स अ लेट्स से 25-year-old प्लेयर और इफ इट्स एन 18-year-old प्लेयर, सीनियर प्लेयर कौन कौन से हैं, फॉरनर्स कौन कौन से, सिटी कौन सी है, देन वी स्टार्ट लुकिंग एट ऑल दीज एस्पेक्ट्स.
Okay. It all depends कि which player, किस प्लेयर के पास कितने ऑप्शंस हैं. हाँ. अभी गुड पार्ट ये है कि वी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 9 to 10 to 11. अभी नाउ दिस ईयर in all probability we'll have 12 ISL clubs. Yeah. And it is increasing. But sad part is we only have 12 clubs. तो सारे players को, and our country is huge, massive population, lot of players. The sport is getting increasing day by day. Yeah. A lot of players are coming up because there are a lot of academies, a lot of schools, a lot of every ISL team, they have a reserve team. Now there's a under 18 league that happens. So the number of players being produced are a lot. Yeah. But the pace with which we are producing players, okay, we can argue over it. Quality players, not that good players, that's a different topic. But the number of players we are producing with the number of clubs getting getting increased, there is no match. Yeah. तो वही प्लेयरों को इन्हीं प्लेयर्स में, इन्हीं क्लब्स में हमको प्लेस करना है. So that challenge becomes really, really massive. True. True. So coming back to the question, if a player has a choice, had a fantastic season, he has a choice, then he looks at all these factors. सबसे important, the most important factor for any player is कि coach कौन सा है, उसका style of play क्या है और रोल क्या है then second third fourth city क्या है, क्लब कौन सा है, सैलरी कितना है, टीम कैसी है, फॉरेन प्लेयर्स कौन कौन से थे, लास्ट में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया. ये चीजें सेकेंडरी हैं फॉर दोज प्लेयर्स who had a really good season and who has multiple offers. Okay. तो कभी ऐसा हुआ है कि a transfer, even if it went through, left a slightly bad taste, maybe, यार मजा नहीं आया, shouldn't have happened, maybe on your end, from your perspective at least? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कभी भी होगा. हाँ, ट्रांसफर होने के बाद सीजन के मिडिल में ऑफ कोर्स तब तो बहुत बार हो सकता है. From players end or the club's end? Both. Okay. Both. Because be it India, be it like Philip Coutinho, big transfer, things didn't work out. I was very happy because I've been a Liverpool fan for about 20 years now. I was very happy it turned bad. So now imagine I'm a Barca fan. Okay. So imagine that these transfers can happen. You sign a big player on a big money, player is not happy. He was kind of living his dream in Liverpool. Yeah. Made a big transfer, things didn't work out. So club is not happy, player is not happy. I'm sure agent is happy. So that can happen. But at the time of signing, no. Okay. Then it won't happen. Okay. Okay. In such a case, like you said, middle of the season, something happens for whatever reason. I'm sure a lot of times an agent's job is done when the transfer is done. उसके बाद उसका कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं. क्लब के मैनेजमेंट में क्या करेगा एजेंट बाहर से बैठ के? But can a player relationship also turn sour then? Yes. Yeah. No, player, our job is sometimes you can be blamed for doing your very best. That's what yeah. So yeah, if the transfer was not as successful when it comes to a player's career, he might be getting the best money, best facilities, everything, but let's say if he's not getting play time, he's not playing, then he's not happy, he wants to make a move, but there are no offers, then yes, your relationship with the player will not be the same. Okay. I want to talk about Indian football in general, Abhi, thoda sa. As an agency, Indian football development, like मैंने बिल्कुल शुरू में बोला था, managers and agents do have a role to play in that, on that front. How big a role do you think is that in terms of the Indian football development on the whole? Because you're working with a lot of younger players. No, if you're asking me what role do we agents play in the development of a football? No, like I can't pinpoint
something in particular or specific, but I feel if I can educate these players, how these players can take care of themselves Yeah. physically and mentally and financially, we are helping uh, the ecosystem as a whole. Because if a player is taking care of himself, he's playing well, that means he's doing well for the club, he's doing well for the country. Yeah. If he's emotionally stable, if he's emotionally doing good, that means he'll perform at a optimum level. If he's taking care of himself financially, that means the game is growing. The financially, it's getting better. So there'll be more people interested. True. If we have more success stories than failures, then with the vast population that we have, there'll be more people, more parents. They will be encouraging their kids to take up the sport. Yeah. So that's the little role we can play. But that's what is needed for any sport to grow in a country, be it any country. When everyone, like yourself, now you are doing a great job for Indian football by bringing out these stories. I want to do my best. Corporates needs to do their best. Politicians need to do their best. Players need to do their best. Clubs need to. When everyone, media, everyone start giving their best in the same direction, magic will happen. True. Abhi, do you think everybody, not everybody, but a lot of these factors are sometimes pulling in opposite directions though? Sometimes they always will, because the thing is, end of the day, we are all humans and run by emotions. You Okay. can't have a good day every day. You can't be in a good mood every day. You can't be thinking straight and right every day. And these factors will always play. Yeah. Now, I I am encouraging a player and some other agent wants to poach a player. Yeah. He'll just call that player and try to corrupt his mind. Yeah. But that does not mean that that person doesn't want good for Indian football, or that person is a bad person, bad human. No, Yeah. it's just that how you think on that day. That's why when I say, you have to be physically and mentally fit. It's not just for footballers, for True. every human on this planet. True. If you want good for yourself, your family, your society, and your country, these two factors play a big role. True. True. How effective has ISL been from your perspective? Like you've literally seen your career and ISL Same grow time, together. Yeah. it's the same time. Big role, man. Big. Though it has got the attention it's needed. Nothing to take away from I League clubs. They have supported Indian football from years. With it, and that time it was run with all the love and passion for the game. Yeah. With ISL coming in, it got the the broadcasting improved, the fan engagement improved. Lot of big stakeholders, they got involved into the game. Yeah. Now ISL has become an international name. A lot of big players, they want to come to the country. Earlier when it started, players who were like finishing their career, they wanted to come and play in the country. Yeah. Now 24, 25, 26, 28, 21 players of that age they want to come. As an agent, we keep getting these profiles from players who are playing at really good league or who have played at top leagues. They want to Yeah. come play in India, because a good name is going, a good name, good reputation that ISL has built for itself. So things have changed, and I would say things have changed drastically, because if you see, 10 years is a very small time. It's a very short time. Yeah. In that short time, the way we have seen things evolved, it has been massive. True. So, last question then. For anybody out there who wants to get into the agent side of things, how does one do that first? And maybe what are the key traits that
somebody can have एक जो specific maybe a one or two qualities that okay if you have these तो the road might be 10% easier. उससे ज्यादा तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता. I think I can't pinpoint के exactly क्या quality, but I would say I can talk about myself and my team. Like मेरी team में there's this guy called Harish. We all call him Harish भाई. Indian football में उनको हरीश भाई के नाम से आना था. सुजय उसको इतनी नॉलेज है प्लेयर्स की, कौन प्लेयर कहाँ खेल रहा है, कौन से पोजीशन में खेल रहा है, उसकी एज क्या है, उसको टिप्स पे याद है. Okay. वो मुझे इतना कॉल करता है, इतना इंफॉर्मेशन देता है, एंड ही इज सो पैशनेट अबाउट द गेम दैट स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स ही गेट्स वेरी एक्साइटेड. Okay. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन, मतलब मैं उससे बहुत एनर्जी ड्रॉ करता हूँ कि ऐसा पैशन चाहिए. ही इज डिफरेंट. मतलब मेरे को तो अगर आपके पास वो पैशन है, if you feel connected to the game, if you feel connected to players. अभी क्या होता है, बहुत से लोग इसलिए उसमें आना चाहते हैं, वो देखते हैं एक बड़ा ट्रांसफर हुआ, उसने बड़ा ट्रांसफर किया, वो प्लेयर्स के साथ मीटिंग कर रहा है, प्लेयर्स के साथ बैठा है, प्लेयर्स के साथ पिक्चर. these things are like 1%. There is a lot of hard work, physical and more mental. Yeah. If you want to try, of course you can always, because now there are so many agencies. True. You can work with any one of them, and all these agencies are always open to passionate people who understand football, people who connect to people. उसके लिए हम हमेशा open है. So if you are someone who aspires to be a football agent, or who wants to be involved into Indian football, you can definitely work with any of these guys who are already doing this. And if you want to work as an agent, then you have to clear an exam now. Yeah. Are you hiring by any chance? No, we are always looking out. Always looking out. Although now things have become so difficult that if you are not a licensed agent, you cannot contact a player. Okay. Yeah. So you can learn the tricks of the trade, but you cannot contact players directly. Like if you're working at an agency, then I think you can not only even speak to people. Only a license. I'm not talking approach. Once, let's say somebody is already working with the agency, even then it's not allowed to conversation. No, let's say if like Harish bhai can speak to Anirudh. Okay. Fair. I think that's a very insightful end to a very insightful conversation on the whole. I hope आपको ठीक लगा. I hope. मुझे बहुत मजा आया. I love this is my bread and butter. I love talking about it. And again, honestly speaking, coming from a fan of sport in general and football fan, it was hugely enlightening. And thank you so much, sir. Thank you, man. My pleasure.